similar to the retractors of the upper lid, but they are not as strong as the upper lid, because the upper lid has a separate muscle, the levator palpebrae superioris, and a proper Mueller's muscle which act as retractors of the upper lid. The lower lid has similar anatomy, but laser pointer hai yaar? It also has two layers. One is the fibrous layer and the other is the Mueller's muscle. But the configuration is slightly different. The fibrous layer starts from the capsulopalpebral head of the inferior, the sheath of the inferior rectus muscle. And then it divides to envelop the inferior oblique. And then there's a condensation in front of the inferior oblique called the Lockwood's ligament or the suspensory ligament of the eyelid. And from there on, the fibrous layer advances as a sheet and then inserts onto the lower border of the tarsal plate. So between the fibrous layer and the conjunctiva, there's scattered fibers of smooth muscles, which are the same as the Mueller muscle in the upper lid. The orbital septum in the lower lid, in the upper lid, the orbital septum fuses with the levator tendon, but in the lower lid, the orbital septum fuses with the capsulopalpebral head, just close to the tarsal plate. So if you open the conjunctiva and the lower lid retractors about 2 millimeters beneath the lower border of the tarsal plate, you can enter directly into the orbital fat here. So these lower lid retractors, they provide vertical stability to the eyelid, and if they are damaged or if they are disinserted, the lower lid loses its vertical stability and can move inwards or outwards, depending on what the other involutional changes are in the tarsal plate and in the lateral and medial canthal tendons. So when you examine these patients, you need to determine how much laxity they have, because that is one of the main pathological or pathophysiological factors which you have to deal with while correcting these patients. So you can check the horizontal lid laxity with a pinch test. You gently grasp the center of the eyelid and pull it away from the eye and measure how much it is distracted from the eyeball itself. So if it is more than 10 millimeters, then that means that there is an excessive lid laxity. Also, you can test the same by a snap test, where you just pull the eyelid downwards and then release it and see how quickly it snaps back with the eyeball. If it quickly snaps back, then there is no laxity or there is minimal laxity. But if there is a slow return to the eyelid, then there is a moderate laxity, and if the eyelid remains away from the eye for some time before going back or even after a blink, then so if it returns incompletely even after a blink, then there is a very severe laxity of the lower eyelid. So here you can see these tests being done. You see, this is a snap test. You can see that the eyelid goes back but slowly, and when you ask the patient to close the eyelid, then here you can see that by pulling the eyelid laterally or medially, you can check whether the lateral or the medial canthal tendon is lax. Here you can see the eyelid goes back very slowly, so there is a very severe case of lid laxity. So how do you correct these two different pathologies? So one is the vertical lid instability, which happens because of the attenuation or dehiscence of the lower lid retractors. and that is corrected either by Weiss procedure or the Jones procedure.
So then there is the overriding of the preseptal muscle over the pretarsal muscle of the orbicularis, and that is corrected by a horizontal incision that we make in the lower lid while exposing these retractors. And then if there is a prolapse of orbital fat into the lower lid, then that is because of the orbital septum laxity. That can be corrected with a blepharoplasty of the skin and muscle. And the horizontal lower lid laxity, if present, has to be corrected by a lateral tarsal strip. So the best procedure to correct an entropion and a long-term, with a long-term good result, would be to combine these Jones procedure with a lateral tarsal strip. So here you can see that just simple Jones procedure has been done, but no lateral tarsal strip was performed. So that does not deal with the laxity of the eyelid, and there is still a chance of recurrence later on. So the various steps of the Jones procedure are: you make the incision between the about 2 to 4 millimeter beneath the lower lid margin, and then open the orbicularis and expose the orbital septum here. And then once you open the septum and expose the orbital fat, the lower lid retractors are a white sheet of fibrous tissue above the orbital fat. So here you can see these once the fat is retracted downward, this white sheet is the lower lid retractors. You suture the lower lid retractors with the lower border of the tarsal plate and the skin, and then close the incision. So that will result in plication of the lower lid retractors. So I'll show you a video now which will combine both lateral tarsal strip and the Jones procedure. So here you just pass a traction suture through the gray line with the 4/0 silk to put the eyelid on traction. And you make an incision about 2 to 3 millimeters below the eyelid margin. You can make either with the blade, or you can sometimes use radiocautery, which reduces the chances of bleeding. Then you open the orbicularis, and along the length of the incision, and beneath you can see the white orbital septum. Then you dissect between the orbicularis and the orbital septum. Here you open the orbital septum, and you can see the yellowish fat. It's a bit difficult from here, but the surgeon sitting on the top can see the fat from below the skin muscle flap. So once you've opened that, this white fibrous tissue is the lower lid retractors. So you mark that with you can confirm that by asking the patient to look up and down, and you can feel the traction when you hold that fibrous tissue. So you mark that with a 5/0 Weichel suture, and then you move on to the lateral tarsal strip. So you make a lateral canthotomy and go down to the lateral orbital margin by cutting the orbicularis and the skin. Here you can see that the white periosteum of the lateral orbital margin has been exposed. You clean it and remove the orbicularis away from the periosteum. Then you do a lateral cantholysis, where you remove cut the inferior truss of the lateral canthal tendon, and so that the eyelid is completely free or mobile. And once you've done that, then you fashion the lateral tarsal strip. You cut along the gray line and separate the skin and muscle flap from the tarsal plate. Then you cut along the conjunctiva, inferior border of the tarsal plate. Remove all the epithelium from the tarsal strip,
Once you've done that, then you shave off the epithelium from the posterior surface of the tarsal plate and cut it short. Then you pass there's a double-armed vical suture. You pass it from the inside of the periosteum and out, so that you make a loop of the suture. Once you've got the loop, then you pass the tarsal strip through the loop and then pass the 2 needles from the posterior to the anterior surface. Here. Once you've done that, then you tighten the two ends, and the tarsal strip will go and attach itself to the lateral orbital margin. Once you've done that, then you just tie the suture and cut it short. Then you go back to the lower lid retractors here, which we've already marked, and then you suture them to the lower border of the tarsal plate. So you use about maybe 3 or 4 sutures to remove these retractors which have dehisced and gone back into the orbit, and you move them forward and attach them to the lower border of the tarsal plate. You can use as many as 3 or 4 or whatever is required, so that the retractors are firmly attached to the lower border of the tarsal plate. You remove from both sides so that the skin is tight. It should not be excessive, because otherwise it's going to result in an ectropion. And then you suture the 2 incisions with the absorbable maybe 7/0 vicryl or 8/0 vicryl, whatever is available. So that was the surgical procedure. So here you can see a few of the examples of these patients who have been dealt with like this. This is a lower lid entropion of the left lower eyelid. You can see the laxity, and this is after correction. So here the eyelid is in good position with. Thank you very much. Any experience of doing it in the ectropion? Ectropion, yes. In ectropions, paralytic ectropions and ectropion which is especially very lax. In those patients, you can do this procedure from the inside, from the conjunctival side, and then also to combine it with the lateral tarsal strip, and that corrects it very nicely. One of my patients was of paralytic facial palsy, long-standing paralytic ectropion. Fortunately, there is only laxity, so I don't have to flexion procedure. Yeah, in them only a lateral tarsal strip, or sometimes tightening of the medial canthal tendon is all that is required. Yes. नहीं, you can use interrupted sutures. Loop का ज़रा ये ज़रा वो अच्छा, it holds well, and it's a mattress suture, और उससे ज़रा अच्छा वो grip अच्छी आती है, strength ज़्यादा होती है उसमें. I think that, thank you very much, Dr. Ramal. This procedure was combination of blepharoplasty, Jones procedure, and lateral tarsal strips. So any other questions, sir? I think the house is open to the discussion. This is an important, very common ailment in oculoplastic practice, lower lid entropion. When I went to England during my training, वहाँ पे जो है ना वो there was a afternoon list, used to be an afternoon list, जो कि वो SHO के हवाले होती थी, और उसमें वो सारे जो है ना एंट्रोपियन और इस तरह की चीज़ें होती थी, और उसमें वो होता था कि ये आपने जाके बस पहले दिन ही आप जाके जो है ना वहाँ पे वाइस प्रोसीजर करते हैं. तो वो हमने किताब से पढ़ के जो है ना वो वाइस प्रोसीजर शुरू किया, लेकिन there was a lot of recurrence in those patients.
उनके अंदर दे डू बिकॉज वी नेवर यूज टू, आई मीन उस वक्त हमें इतना आइडिया भी नहीं था लेड लैक्सिटी का, तो उसको हमने कंबाइन कभी नहीं किया था इसके साथ लेड शॉर्टनिंग के साथ. सो व्हेन आई डिड माय ऑक्यूलोप्लास्टिक फेलोशिप, तो वहाँ पे द स्टैंडर्ड प्रोसीजर वाज लो लिड रिट्रैक्टर रीइंसर्शन विद lateral tarsus strip. That gives you the best outcome and best long term जिसमें recurrence नहीं होती यानी. So you basically you want a procedure which is going to be long lasting and comfortable for the patient as well. So a wise procedure और even everting sutures हम उनमें limited रखते हैं जिनमें बहुत लंबा procedure आप ना कर सकें. पेशेंट इज़ नॉट फिट, पेशेंट जो है वो इज़ फिज़िकली जो है वो इतनी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो वांट्स अ शॉर्ट प्रोसीजर, तो उनके अंदर आप ये टेम्परेरी प्रोसीजर्स जो है ना वो कर सकते हैं लाइक वाइस और इवन एवर्टिंग सूचर्स, और यू कैन कंबाइन देम विद लैटरल टार्सस स्ट्रिप टू सम एक्सटेंट, बिकॉज लैटरल टार्सस स्ट्रिप में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जोन्स प्रोसीजर में थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है. तो इन जनरली जो है ना हमारी डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. इफ प्रेफरेबली आई वुड लाइक टू डू inferior retractor reinsertion with lateral tarsus strip to give a long term stability of the eyelid. But अगर वो जो है वो patient is unable to tolerate that procedure, तो फिर then we shorten it with combining it with either everting sutures or just a wise procedure. वॉइस प्रोसीजर आप ऑप्शन नहीं करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, बट इट हैज़ टू बी, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद लिड शॉर्टनिंग. अगर लिड शॉर्टनिंग आप नहीं करेंगे ना तो देयर इज अ वेरी वेरी मतलब लार्ज इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस इन दीज पेशेंट्स. लिड शॉर्टनिंग के अदर प्रोसीजर्स भी आप बता सकते हैं? मतलब यू कैन कंबाइन वाइज प्रोसीजर विद जो है वो उसका वो वेज रिसेक्शन. Wedge resection भी, but that doesn't really address the actual cause of the lid laxity, which is mainly the lateral canthal tendon. वो अगर lateral canthal tendon आपने उसी तरह छोड़ दिया तो वो फिर कुछ ऐसे बाद फिर दोबारा lid laxity होने की. वो जो ऐसे आपने जो बताया ना, pre-op evaluation is very important. जी. You check for the lateral canthal laxity, medial canthal laxity and lower lid laxity. 3 laxities you check. by the test जो ब्रिगेडियर साहब ने बताए हैं, पिंच टेस्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग टेस्ट. सो अगर लैटरल कैंथस ठीक है अपनी जगह पर प्रिज्यूमेबली, या मिडिल कैंसर अपनी जगह पर ठीक है, तो फिर आप जो है उसमें रेज रिसेक्शन तो कर सकते हैं और साथ 20. और अगर लेटरल कैंथस लैक्सिटी है देन ऑब्वियसली LTS हैज़ टू बी डन. और अगर मिडिल कैंथल बहुत लैक्सिटी है फिर उसके साथ वो भी प्रोसीजर आपको मिडिल कैंथल प्लाइकेशन जो है वो भी करनी पड़ेगी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्री ऑपरेटिव बेसिक्स. वी हैव टू गो टू द बेसिक्स फॉर ऑल दैट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई क्वेश्चंस आपके यंगस्टर्स? आई थिंक वी हैव a lot of time for discussion because we do not have unfortunately other speakers at the moment. So anyone can सामने आ जाएं आप. तो उसमें आप जब वाइज प्रोसीजर में डिवाइड करते हैं आईलिड को, देन यू जो अपर पार्ट ऑफ द आईलिड है ना उसको आप शॉर्टन कर देते हैं एज अ वेज रिसेक्शन. But that I mean I haven't seen many people doing it. सर इवन जो लेट कटिंग सूचर है, हाँ जी, वो भी हाँ, मतलब अगर आप पेशेंट जो है वो इज इल और समथिंग तो जस्ट लेट कटिंग, बट वो ये है कि उसका इफेक्ट जो है ना टेम्परेरी होता है. इट डजंट रियली लास्ट फॉर लॉन्ग, मे बी 5-6 months निकल जाए शायद उसमें, देन इट इज गोइंग टू रिकर अगेन. बैक साइड रिट्रैक्टर फंक्शन जो आप देखते हैं सर, हाँ जी, तो उसमें हम ये भी कहते हैं पेशेंट मूव कर दें जी बिल्कुल. तो लोअर लिड अगर मूव कर रही है हाँ. तो रिट्रैक्टर साथ फंक्शन नहीं, उसमें मूव तो करेंगे, इवन इफ दे आर डिसइंसर्टेड फिर भी वो करेंगे, लेकिन उतनी एक्सर्शन नहीं होगी जितनी नॉर्मल होती है. ठीक है ना, उसको लेकिन मेजर करने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है. उसमें बेसिकली अगर जो है आप लिड को थोड़ा सा ओपन करके देखें, इफ यू कैन सी अ रेड लाइन बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड द लोअर फोर लेग्स, सो दैट
is actually shows you कि वो जो retractors है ना वो disinsert करके पीछे चले गए और वो red line जो है it is the orbicularis muscle showing through the conjunctiva. So that is one of the tests to observations to see the lower lid retraction retractors जो हैं वो disinsert हुए हैं. सर हम लोग तो इस तरह करते हैं स्नैप टेस्ट या पिंच टेस्ट करते हैं ये तो जस्ट हम लोअर लिड पे ऐसे रिट्रैक्शन को छोड़ते हैं लेकिन इससे लोअर लिड रिट्रैक्टर फंक्शन चेक होता है नहीं वो एक स्पेशल मूवमेंट से तो मूवमेंट से चेक इसमें तो सिर्फ हम इसमें तो आप लैक्सिटी नहीं देखते हैं इसमें तो लैक्सिटी आप चेक करें कि आईलेट लैक्सिटी कितनी है और फिर लैटरल कैंथस में है या मिडिल कैंथस में है या दोनों में है व्हाटएवर द केस में भी है. हमारे कोयटा के मेहमान भी बैठे हैं. कोई एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? कोई और आपसे आपकी तरफ से कोई सवाल कोई कमेंट्स कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर करें. ठीक है सही है. क्या होता है एंट्रोपियन ज़्यादा होता है लोअर लिड में या एंट्रोपियन में ज़्यादा देखते हैं एक्ट्रोपियन कम देखते हैं. अगर आप मैं एक्ट्रोपियन वाली मेरी प्रेजेंटेशन है दे दीजिए दिखा दीजिए. सर आप जो हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्ट में करते हैं दो तरीके हैं एक आप बेसिक सेक्शन कर रहे हैं दूसरा आप लेटरल ट्रांसफर से कर रहे हैं तो इन दोनों में से प्रेफरेबल जो है वो लेटरल ट्रांसफर बिकॉज़ दैट इज मोर एनाटॉमिकल प्रोसीजर. वो जब आप बेसिक सेक्शन करते हैं ना तो वो फिर वो उतना वो जो एक्चुअल पैथोलॉजी है ना जो लोअर लिड जो इसकी कैंसर लैक्सिटी है उसको नहीं आप एड्रेस कर सकते. वो उस तरह का उसमें रहेगा. बड़ा मुश्किल सा नाम है क्या आइए बैठिए. वेलकम डॉक्टर बी ए नईम साहब. आगे आ जाओ इधर आ जाओ. इधर तो आमिर साहब बैठ जाएंगे. इधर आप कुर्सी ले रहे हैं और एक और. अच्छा हजरत जी आगे आ जाओ. So we now Brigadier Amar will talk about the ectropion repair. वो टार्सल एक्ट्रोपियन जिसका मैंने आपको जिक्र किया था ना वो मैं आपको भी दिखाता हूँ. Usually in our practice we do see more of entropion than of ectropion, but ectropions are there. Especially upper leg ectropion is relatively rare. It is only mostly we see because of the trauma, like chemical trauma. Hanging loose in the air. So this was I just sort of skip the history and the anatomy, which we've already discussed. So, what are the altered anatomy which is responsible for entropion or ectropion? क्योंकि changes in evolution तकरीबन एक जैसे होते हैं, but why does one eyelid result in ectropion and why the other in entropion? उसमें दो तीन जो है ना फैक्टर्स हैं. उसमें एक तो जो है ना लैक्सिटी ऑफ कैंथर टेंडन्स जो है ना और जो मेनली जो है वो लैटरल की होती है, वो दोनों में होती है. एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन दोनों के अंदर होती है. लाइक इन दिस पेशेंट सीवियर मतलब लैक्सिटी है इसकी इधर. फिर डिससेशन ऑफ द रिट्रैक्टर्स और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेमेली हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू. और उसकी वजह से जो है ना वो एंट्रोपियन में अगर मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ऑर्बिकुलरिस तो प्री सेप्टल जो है ओवरराइड्स ऑन द प्री टार्सल और उससे जो है वो आईलिड जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है. अगर मसल इतना पावरफुल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, मसल में भी एट्रोफी हो इन्वोल्यूशनल, तो फिर दैट रिजल्ट्स इन एक्ट्रोपियन. तो साइंस ऑफ डिसइंसर्शन ऑफ द लोअर आईलिड रिट्रैक्टर्स है. एक तो एक्सकर्शन ऑफ द लोअर लिड कम हो जाएगी
जब आप पेशेंट को ऊपर नीचे देखने के लिए कहेंगे। इसमें भी ये काफ़ी सीवियर वो टार्सल एक्ट्रोपियन हुआ होगा। इंफीरियर फोरनेक्स वुड बी डीप बिकॉज जो लोअर लिड रिट्रैक्टर जब वो डिसइंसर्ट होकर पीछे जाते हैं तो वो फोरनेक्स को पीछे खींच लेते हैं ऑर्बिट के अंदर। एंड देन देयर इज अ जब सामने देख रहा होता है प्राइमरी पोजीशन में तो फिर हायर रेस्टिंग लेवल ऑफ द लोअर लिड होता है। एंड देन देयर इज डिस्क रिएक्टर्स और देयर इज अ रेड बैंड बिलो द टार्सल प्लेट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो रिट्रैक्टर्स पीछे चले जाते हैं तो आपको ऑर्बिकुलरिस नजर आना शुरू हो जाता है थ्रू द कंजंक्टिवा, so that appears as a red band. सर ये रेड बैंड क्या है? It is the orbicularis. जो ये एरिया है ना टार्सल प्लेट के नीचे, अगर कंजेशन इतनी ना हो तो वो वहाँ से आपको ऑर्बिकुलरिस मसल नज़र आना शुरू हो जाता है कंजंक्टिवा में से, बिकॉज जो रिट्रैक्टर्स हैं वो पीछे चले गए होते हैं। बिकॉज कंजंक्टिवा और ऑर्बिकुलरिस के दरमियान सिर्फ रिट्रैक्टर्स और सेप्टम होता है, तो वो सारा कुछ जब पीछे चला जाए अगर तो फिर वो ऑर्बिकुलरिस नज़र आना शुरू हो जाता है बीच में से। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्ट्रोपियन होगा उस वक्त जब बिकॉज ऑफ दी ऑर्बिकुलरिस इस्कीमिया और ऑर्बिकुलरिस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता उसकी वजह से और उसकी एट्रोफी हो जाती है। और एंट्रोपियन में देयर इज एन इंक्रीज टोन ऑफ द प्री सेप्टल और वो ओवरराइड करता है प्री टार्सल मसल के ऊपर। और फिर एक्ट्रोपियन के अंदर जनरली जो है ना द टार्सल प्लेट इज थिकर एंड मोर हैवियर than in patients with entropion. So टार्सल एट्रोफी की वजह से जो है टार्सल प्लेट ज़रा छोटी होती है तो वो अंदर की तरफ को मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके। इसी तरह कोलेजन फ्रेगमेंटेशन एक्ट्रोपियन में ज़्यादा होती है और सेप्टल एट्रोफी अगर हो तो फिर एंट्रोपियन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और इंक्रीज अगर एडिपोज टिश्यू हो उसमें कैप्सुलोपैल्पेब्रल फेशिया में तो फिर वो अगेन म्यूलस मसल को भी वो वीक कर देती है, तो वो दैट ऑल्सो results in ectropion. So how do you do the correct this tarsal ectropion? So you avert the eyelid and you make an incision, conjunctival incision below the tarsal plate here, about 2 to 3 millimeters below the tarsal plate. Then dissection आप करते हैं, उसमें ये conjunctiva और है और जो है उसमें और इंटीरियर साइड पे जो है वो टार्सल प्लेट ऑर्बिकुलरिस और स्किन है। सेप्टम और उसके बाद दरमियान आप डाइसेक्ट करते हैं टिल टू एक्सपोज द ऑर्बिटल फैट और उसके ऊपर जो है वो ये रिट्रैक्टर्स पड़े होते हैं। So you pass absorbable generally catgut is good enough. You pass them through the skin. पहले सबसे स्किन में से पास करते हैं और ऑर्बिकुलरिस में से और कंजंक्टिवा में से और इंफीरियर फोरनेक्स में आप निकल आते हैं। देन यू पास देम थ्रू द टार्सल प्लेट फ्रॉम द कंजंक्टिवल साइड, यहाँ से ये जो आपने टार्सल प्लेट ऊपर अपर पार्ट ऑफ द आईलिड में थी उसमें से पास करते हैं एंड देन रिट्रैक्टर्स में से पास करते हैं और फिर रिट्रैक्टर्स में से वापस टार्सल प्लेट में से पास करते हैं। एंड देन यू जो है ना जब इधर से टार्सल प्लेट में से निकल आती है कंजंक्टिवल साइड पे, देन यू पास इट थ्रू द फोरनेक्स अगेन एंड आउट थ्रू द स्किन। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड सूचर कि आप स्किन में से जाते हैं पहले अंदर, इंफीरियर फोरनेक्स में निकलते हैं, फिर कंजंक्टिवल साइड से टार्सल प्लेट को लेते हैं, फिर रिट्रैक्टर्स को लेते हैं, फिर वापस टार्सल प्लेट को और फिर फोरनेक्स में से निकल के वापस आ जाते हैं स्किन के ऊपर। सो 1 or 2 और मे बी 3 सूचर्स इस तरह के आप पास करते हैं ये कैटगट के एंड देन यू डू द लैटरल टार्सल स्ट्रिप वंस यू पास द सूचर्स। जो लैटरल टार्सल स्ट्रिप का वही प्रोसीजर है जिस तरह मैंने आपको वो जो मैं अभी जो दिखाई थी वो इसकी वीडियो नहीं है जी, इस वाले की वो एक डीएपिथलाइज करके देन यू पास इट थ्रू द वही टार्सल जो लैटरल ऑर्बिटल पेरियोस्टियम है और उसमें टाइट करके आईलिड को एंड देन यू टाई दी कैटगट सूचर्स ये जो हैं। सो दैट विल करेक्ट दी होल। अब ये आप देखें यहाँ से हमने गए थे अंदर, पहले टार्सल प्लेट में से गए, फिर रिट्रैक्टर्स में से गए, फिर वापस टार्सल प्लेट में से, फिर फोरनेक्स में से और फिर बाहर।
समझ आइए आपको। तो फिर ये इस तरह के हमने 3 सूचर्स जो है ना वो पास किए हैं। सो दिस वाज प्री ऑप एंड दिस इज़ द पोस्ट ऑप, ठीक है ना, बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आ गया है आईलेट। सिमिलरली ये पेशेंट है, ये इसका प्री ऑप और ये पोस्ट ऑप। नहीं कोई कैट नहीं, नाम कोई नहीं है, नाम कोई नहीं है इसका। हाँ नहीं so this is the post op आई। ये स्किन से एक्चुअली जो है वो बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन अ डबल आर्म सूचर, लेकिन हमारे पास वो डबल आर्म इतने इजीली अवेलेबल नहीं ना होते। तो डबल आर्म अगर हो तो फिर देन यू पास इट फ्रॉम द रिट्रैक्टर्स फर्स्ट, दोनों नीडल्स आप टार्सल प्लेट में से पास करते हैं और फिर इन्फीरियर फोरनेक से बार स्किन में। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि वो सिंगल आर्म्ड होते हैं सूचर्स, एक ही नीडल होती है, तो आपने पहले स्किन में से जाना है यहाँ से, और ये ऑर्बिकुलरिस, रिट्रैक्टर्स और कंजंक्टिवा में से इन्फीरियर फोरनेक्स में निकल आना है। यहाँ से जाना है, फिर आगे जो आपने जो इंसिजन दी हुई है ऊपर जो टार्सल प्लेट का लोअर बॉर्डर है उससे अंदर की तरफ जाना है, फिर रिट्रैक्टर्स को लेना है और फिर वापस टार्सल प्लेट की एंटीरियर सरफेस से पीछे भी वापस आना है कंजंक्टिवा में, और फिर नीचे इन्फीरियर फोरनेक से बार स्किन में। इसमें बेसिकली वही मैंने आपको बताया ना, एक तो एटियोलॉजी, एक तो बिल्कुल रिट्रैक्टर्स पीछे चले गए हैं, सेप्टम भी जो है ना वो उससे सेपरेट हो गया है जो टार्सल प्लेट है, और दूसरी ये कि एट्रोफी है इसकी कोलेजन की, यानी ये कोलेजन की जो है ना फ्रेगमेंटेशन है, तो उसकी वजह से जो है वो आईलिड और जो टार्सल प्लेट है वो दैट इज़ अ बिट हैवी देन नॉर्मल। सो वो ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टू रिजल्ट इन अ कंप्लीट एक्ट्रोपियन। नहीं, अगर एक एंटीरियर सरफेस साइड से करेंगे ना आप तो फिर नहीं होगा ये कंट्रोल से तो बढ़ जाएगा। ये जो है देखिए एक बात, एक तो ये हमने किए रीइंसर्ट किए हैं, लेकिन हमने एक कंजंक्टिवल साइड से जाए किए हैं सो दैट जो टार्सल प्लेट है ना वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। इट इज़ मॉडिफाइड कह लो आप, जोन्स प्रोसीजर ही है मॉडिफाइड, क्योंकि आप रिट्रैक्टर्स को रीइंसर्ट कर रहे हैं बट यू डूइंग इट फ्रॉम द कंजंक्टिवल साइड आएंगी। वो जो नीचे से ऊपर सूचर लेके वापस आ रहे हैं ना वो उसको इन्वर्टेड है। इसमें दो और आप बताइए। ठीक, बस खत्म, बाकी खत्म हो गया। हाँ जी, ये देखें ना आप, तकरीबन आप देखें कि तकरीबन ये 5 to 6 मिलीमीटर स्किन लिड मार्जिन से हैं। से जब बाहर आएंगे तो पता चलता है। इसमें एक चीज जो है वीडियो भी शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं खैर मैं वीडियो भी बनाता हूँ इनकी, इसकी है कोई है नहीं, वो ज़रा फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शायद। आएंगे लैश मार्जिन से डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसका? एक तो लोअर लिड से चले गए, कॉर्टेक्स से निकल रहा है, तो दोबारा सूचर लेंगे तो अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस क्लोज टू आईलैश लेंगे तो एट्रोपिया हो जाएगा। नहीं, आपने उसी जगह पे निकलना है जहाँ से आप अंदर गए हैं। देखें ना आप, ये देखें ना, मतलब आप दोनों पॉइंट्स वही हैं एंट्री के आपके, ठीक है ना, एंट्री एग्जिट का वही पॉइंट है आपका, लेवल वही है। यानी आपने दोनों एंड्स को टाई कर देना ना आपस में, यानी टाई करेंगे तो फिर वो रिट्रैक्टर्स आके टार्सल प्लेट से लग जाएंगे यानी। और इनका ये फ़ायदा है कि ये आप ये स्कारिंग ज़रा जल्दी कॉज करते हैं कैट, तो वो विद इन अ वीक टू में जो है ना वो ज्वाइन कर जाते हैं, उससे मतलब रीइंसर्ट हो जाते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। ब्रिगेडियर साहब, एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एक बाज़ दफ़ा एंट्रोपियान फिर भी रिकर कर जाता है जी, जैसे वो ये प्रोसीजर्स करके भी, तो उसमें एक हमारे जो दोज हु हैव इंटरेस्ट एंड यंगस्टर्स स्पेशली, कंप्लीट एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आईलेट की एग्जामिनेशन जैसे बताया गया करेंगे, कंजंक्टिवल साइड पर से भी आईलेट की एग्जामिनेशन ज़रूर करें। पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स स्कारिंग होती है उधर, और वो स्कारिंग भी एंट्रोपियान को कंट्रीब्यूट कर रही होती है। उस सूरत में आप बेशक जो मर्जी बाहर से करेंगे, ये फिर फेल हो गया, तो इस वजह से ये एक फेलियर की रीज़न है।
हाँ जी उनका एक्सपेक्टेशन है तो फिर वो आपको कुछ और करना पड़ेगा। सर उसमें फिर आप रिवर्जन टेस्ट रिवर्ट रिवर्ट करके तो उसमें आप फिर देखते अगर हैं। रिवर्ट हो जाए तो सिनारियो अगर ना हो तो एक्सपेक्टेशन बाद में इसमें शार्ट होगी। और दूसरा एक्ट्रोपियान में जो बहुत ज़्यादा एक्ट्रोपियान है इस तरह क्रॉनिक होता है ना, उसमें अंदर कंजक्टिवा भी हाइपरट्रोफी कर चुका होता है और उसमें स्कारिंग तो नहीं है। क्या हमें बाज़ दफ़ा मुमकिन है इन सम केसेस यू हैव टू डू कंबाइन इट विद फुल थिकनेस ग्राफ्ट, बाज़ दफ़ा इतना भी इतनी शॉर्टनिंग हो जाती है, इतनी स्कारिंग हो जाती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच come into play to either result in entropion or ectropion. So important thing is lid as a whole should be examined from inside out, conjunctiva, eyelid margins and skin, और फिर उस laxity के सारे procedures जितने भी हैं. So these are all important basic principles. Decision making should be dependent on what your findings are in the examination. सर कंजक्टिवा साइड से अगर सिंपली आप ऑब्जर्वेट को ट्रैक्टर के साथ स्टेज कर दें कंजक्टिवा साइड से उनको शॉर्ट कर दें फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो मतलब वो उसमें फिर वो नॉट एक्सपोज रह जाएगी, वो आम को इरिटेट करेगी फिर अंदर से, अगर अंदर से आप लगाते हैं। लो रेट सर अपर रेट ज़्यादा मूव करती है ना, लो रेट ज़्यादा लो रेट इतना नहीं करती, लेकिन वो तंग करती है इस तरह ये कि ये तंग नहीं करता पेशेंट को। So now I think we come to the end of the session, and I request for Dr. Naeem Saab to come and please present the shield to the speaker. Always nice, always nice. Thank you very much. Thank you. So we are now going to bring in, this is an end to the first session on oculoplasty. Quetta, for them we have to re-plan. So the inaugural session will take place inshallah tomorrow. Exact time will be notified. Before lunch, however, it will be before lunch. Assalamu alaikum.